यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है वो है क्यू कार्ड। तो क्यू कार्ड से रेलिवेंट ही हमेशा आपके फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं। तो आपको थोड़ा सा हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आज का जो है क्यू कार्ड आपका है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम पे जब एग्जामिनर आपको देगा तो 1 मिनट देगा, यू कैन मेक सम पॉइंट्स, और जब आपको लिखा हुआ देगा जैसे पेपर पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑलरेडी म्यूज़ियम के ऊपर वो नीचे आपसे रेलिवेंट क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए होंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन द म्यूज़ियम and then you have to explain 3 questions. Okay, now I'm giving you topic. A topic is museum. What do you want to say about it? In the past, I thought museum is in the past, distant past, I thought museum is boring and visiting place is boring and quite time wasting place. But now my opinion is changed when I visit to my country museum, as I felt it was quite informative and good for me. आप क्वेश्चन देख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन आगे पढ़े में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू से। तो जैसे आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करें, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप जा सकते हैं। वेल यू नो वर्ड्स यूज कर सकते हैं। When I went to my I went to my country museum 2 years ago. I see a beautiful building built up with red bricks. Good. With red bricks. Then I have find when I went in the building building of museum, I see there are different beautiful things displayed, culture heritage of my country, which are very atmosphere of museum was quite beautiful, and things was displayed arranged very nicely. Then there are some more things I had find in the museum. They were culture heritage of my country, natural beauty of flowers, different kind, which were some herbal plants, insects, medicines of plants, insects, and life of my river, life of my sea life of my country. There are some also we find some different insects, coins and brownies coins and Okay, fine. Now we go to the follow-up question. Why do you think of the importance of museum in history? Well, about museum, in history is very important, you can say. History is very important of a museum. Well, when we see in the past, when people go to the museum, it was very few people can only visit the museum, but nowadays it's changed. It is open for publicly. Everyone can visit the museum in some different hours. Okay, how do you think of heritage of a country? Well, in my opinion, heritage of a country is telling us about the past of the country, about the past of the country, and in which we can see some different kind of beautiful flowers like flora and fauna, some insects and birds, and different kind of geography. Okay, fine. Now tell me, compare the museum nowadays and in the past. In the past, museum were about my opinion. In the past, museum was not as much beautiful, but nowadays they are beautiful. Who people are visit to and pay the museum, they can feel it is beautiful and more beautiful and attractive. In my they are designed well now. If you see the museum now, they are more safe as compared to last one. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. ओके जी, अभी हमने इंटरव्यू लिया है मिस राबिया का, उसके हवाले से बता दूं आपको कि शी नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, तो यू हैव टू ऐड द वोकैब एज वेल, जो हम आपको मटेरियल देंगे उसके हवाले से, और प्लस जब हम पास में बात कर रहे हैं तो कीप इन माइंड के सेकंड फॉर्म सारी आएगी, छोटी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बताते रहेंगे साथ साथ। तो ओवर टू नाउ मरियम का जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका फोटोग्राफ पे कर लें, फेवरेट फोटोग्राफ के हिस्टोरिकल प्लेसेस सर। ओके, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, ऐसे म्यूज़ियम के ऊपर था, तो ये भी पास में जाएगा।
तो जब आपको टॉपिक मिलता था इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस, तो कुछ जगह की बात हो रही है जो ऑलरेडी आप विजिट कर चुके हैं. जी मरियम, आई ऑलरेडी हैव गिवन यू द क्यू कार्ड एंड योर क्यू कार्ड इज द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस. तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? जी प्लीज. There are many historical places in the Lahore, in my country, like Shalimar Bagh, Badshai Masjid, and Lahore. हम बाशी मस्जिद को बाशी मॉस्क भी कह सकते हैं, ठीक है? Bashi Masjid. There are many historical places in my country, like Badshai Masjid, Shalimar Bagh, and Lahore Fort. But I am talking about Lahore Badshai Masjid. This is the best masjid of the world and the biggest masjid of the world. The architecture of the masjid is architecture of the mosque is very tempting and attractive. This building constructed by Mughal Emperor Aurangzeb between 1671 to 1673. The building of the mosque is built by the red bricks, which looked very attractive and beautiful. The architecture, the interior of the building is very beautifully done, and we can see beautiful art on the buildings and the walls of the mosque. The beautiful carving on the walls and on the doors of the mosque and around the windows. Around the windows there are big four gardens among the mosque. Two on the front yard and two on the second yard. There are big fountain in the center of the mosque. In the special occasion, Muslims pray their prayers on the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Okay, fine. Now we go towards the follow-up question. The follow-up question: what do you think of the historic place in the future? The historical place are the In the historical places. Like question आप देख लेना यहाँ से. The historical places shape the culture of the person who came before, and they connect the people from the past to the future. And will the government increases or decrease the safety guard? Do you think? Yeah, in my opinion, some governments take a good care of their historical buildings, and sometimes they ignore it badly. But it's very beneficially if they look after their historical buildings for their culture, for save their culture. Okay, fine. Now next, what are the changes to the local people and economy? इफेक्ट क्या होता है जब लोग विजिट करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस को, टूरिस्ट जो विजिट करते हैं उस पर क्या इफेक्ट आता है? When the outsider visitors visit the historical places, it's very beneficial. The economy of the country raised very nicely and very highly. The tourists came and enjoy the culture and took the pictures of historical buildings, which increased the economy of the country. Okay, what is the impact on the historical places by the tourist? क्या इम्पैक्ट डालता है हिस्टोरिकल प्लेस अगर वो कहीं पे जैसे लाहौर में है तो क्या इम्पैक्ट डालता है स्पेशली टूरिस्ट के ऊपर? They took interest in our history and they know about our culture, and Well, if we talk about the Lahore is a historical place. If the historical places, more and more tourists would like to visit there. ये ऐड अप कर सकते हैं इसमें आप. तो अभी ज़रूरत है चीज़ों को मज़ीद अब करने की. अपने जो स्टूडेंट्स हैं अपकमिंग उनको ये बताना चाहेंगे. ऐसे ही होते हैं तमाम स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता कि सब एक्सपर्ट लेवल आ जाते हैं. इट्स टेक टाइम. जो छोटी छोटी जो हमारी एफर्ट्स होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, ये मिल के एक बड़ी एफर्ट बनाती है. और हमारा वीडियो बनाने का है और आप व्यूवर्स को और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये बैठे हुए हैं, तो इनको एडवाइस यही है कि कीप प्रैक्टिसिंग ऑन इट, कीप प्रैक्टिस ऑन. शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिसिंग करें ताकि वो चीज़ जो आप में कॉन्फिडेंस लेवल अभी कम है, वर्ड्स भूल जाते हैं, तो कीप इट. तो हमेशा वो इसी वजह से आपको कहते हैं कि यू हैव 1 मिनट, यू कैन ब्रेन स्टॉर्म द थिंग. तो ब्रेन स्टॉर्म करें पहले चीज़ों को, फिर बोलना शुरू करें. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू.